नमस्कार, JKLH लाइव में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। दर्शकों, श्रीनगर में G20 का स्टेज सज चुका है। जी हां, आज वहां पर G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक है। इस बैठक के लिए शहर में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कड़े बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। शहर को किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। धारा 370 यानी आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये सबसे पहला बड़ा अपनी तरह का आयोजन है। कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक देख पा रही है। बता दें कि चीन के अलावा सिर्फ 2 देश तुर्की और सऊदी अरब ने बैठक के लिए हिचकिचाहट दिखाई। इन देशों को छोड़ दें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों के 60 डेलीगेट्स इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यह अहम बैठक है। तो लगातार इसकी जो लाइव तस्वीर हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद ये अपनी तरह का पहला बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम है। खास तौर पर यहां पर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर यहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सबसे अहम ये कि न सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरिए बल्कि CCTV हर गली, हर अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। यहां तक कि खूबसूरत डल झील में भी हमने देखा कि किस तरह से वहां पर खुसूसी मरीन्स को तैनात किया गया है सिक्योरिटी के लिए। और आज का दिन बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया G20 की इस बैठक के जरिए कश्मीर की वो तस्वीर देख रही है जिसके लिए कश्मीर शुरू से जाना जाता रहा है। खास तौर पर अगर हम यहाँ के जो मेहमान जब उन्होंने यहाँ पर कदम रखा, लगातार जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से भव्य तौर पर कश्मीर की जो तहजीब और सकाफत है, कश्मीर का जो कल्चर है, जो कश्मीरियत है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इससे मेहमानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। और न सिर्फ यहाँ आने वाले मेहमान जिनमें तमाम अहम शख्सियात शामिल हैं, मीडिया नुमाइंदों को भी खास तौर पर यहाँ पर मदऊ किया गया है। यहाँ के जो लोकल्स हैं, मकामी लोग हैं, कई तरह से उन्हें धमकियां भी दी गई। हमने देखा कि किस तरह से TRF की तरफ से लगातार उन्हें मकामी लोगों को धमकियां दी जाती रहीं कि इस अहम बैठक में वो पार्टिसिपेट ना करें, शामिल ना हो। लेकिन आज यहां पर ये जो तस्वीर निकलकर दुनिया के सामने जा रही है, ये साफ तौर पर बता रही है कि आम कश्मीरी क्या चाहता है। जिस तरह से यहाँ के दस्तकार खुश हैं, यहाँ के फनकार खुश हैं, यहाँ शिकारे वाले खुश हैं, यहाँ पर जो पेपर मैशी का काम करने वाले लोग हैं वो खुश हैं। हर शोबे से जुड़ा इंसान बेहद खुश नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि G20 की बैठक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस अहम मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बैठक से 50 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि कश्मीर हमेशा से ही फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहतरीन जगह रहा है, सबकी पसंदीदा जगह रहा है। क्या कुछ उन्होंने अपनी यादें यहाँ पर ताज़ा की, आपको दिखाते हैं। I think over the last few moments when I was trying to capture what all I was seeing and I was also listening to Amitabh, the first thought that occurred to me was that it is indeed a moment of rejuvenation, a moment of reincarnation. And I'm sure many of you would agree with me, at least to those who belong to my generation, that this event has actually transported us back by about half a century. And exactly 50 years back, we had another star from Mumbai who shook the leg besides the Dal Lake and sent the entire valley rocking in hysteria. And his name, as you rightly guessed, was Shami Kapoor, who virtually made Kashmir his home. And sometimes I wonder, I tend to think, but for Kashmir, whether Shami Kapoor would have been what he ultimately wanted to be. So that is the magic of Kashmir.
The series of movies, Kashmir Ki Kali, Janwar, Rajkumar. He, I think, also not only became a star out of Kashmir, but contributed immensely in personifying Kashmir to the rest of the world. Yeah. And many like him would stay here for months together. The iconic hotel we have sitting beside us, Lalit Hotel, was one of the favorite abodes where they would stay. That time, in those days, it was known as Oberoi. And the entire shooting of the film would be done there. I remember one of the movies, Das Lakh, was virtually they didn't walk out of the hub gate. And many of the beautiful songs would be decked up in the hotel. Hai Duniya Usi Ki Zamana Usi Ka was actually done in the bar of Hotel Oberoi. The old timers would remember. Main Pal Do Pal Ka Shair, was a beautiful lyric written by Sahil Ludhianvi, was done in one of those rooms in Hotel Lalit. And they got some girls from the women college to be the audience. Some of these oldies still remember. So it's virtually a nostalgic, it takes you back. And I think after that, it was also because Kashmir was professionally also, I think, the best location that a film producer or director can find, because it's versatile. You have plateaus here, you have lakes here, you have fountains here, you have snow peaks here, you have skating areas here, you have golf courses here. And it's very cost effective. You have tulip gardens here, you don't have to travel to Holland. It's just beside the hotel where some of our delegates are living. So all this made it a natural destination. And as Amitabh was saying, that every movie would actually have at least one sojourn to Kashmir. And in the process, it became a huge avenue of revenue as well as business. We had school boys and girls doing part-time jobs as extras, as clapper boys, and in Jai Jai Shiv Shankar, the song, besides the temple, we had one of our local groups doing that drum beating. So it became a huge vocation actually till about 1990. And Amitabh was now referring to Bobby. But what is significant is that Raj Kapoor, just before Bobby, had experimented doing a movie in Europe, which was a great hit called Sangam, a triangular love story. And after that he came back to an autobiographical, which was good but didn't work well in the box office. So as a revenge he came back, and when he came back vengefully, his natural choice was Kashmir. He didn't go to Europe, he came to Kashmir. और G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने G20 की बैठक को संबोधित किया और अपने संबोधन में अमिताभ कांत ने कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर खास चर्चा की। Phool Khile, which was Shashi Kapoor and Nanda that time. As a child, no movie of Bollywood was complete without Kashmir. And in the 60s and 70s, Bollywood became synonymous with Kashmir. Bollywood's romance with Kashmir began with movies like Kashmir Ki Kali, Himalaya Ki Godi Mein, and Jab Jab Phool Khile, and they captured the picturesque landscape of Kashmir. No romance in India was complete without Kashmir. And much later there was a film which became a household word in India. And I went and stayed in that cottage which was famous as the Bobby Cottage, because the Bobby film was shot in Gulmarg, and it became a household word in India. And later, more recently, if you look at it, there have been films like Laksh, there have been films like a huge variety of films like Laksh, Highway, Razi, Haldar, and many more have been shot in the state of Kashmir. Actually, getting inspired from Kashmir, this inspiration of Kashmir has been so immense that Indian filmmakers started shooting great films in other Indian states like Rajasthan, Kerala, many other places. But the other big thing that happened was that Indian filmmakers started traveling abroad and started shooting in many other places. So actually, one of our leading movie director, Yash Chopra, his many mega hits like Chandni,
They introduced the majestic Swiss Alps to the Indian audience. And then there was a blockbuster Hindi movie called Dil Wale Dulhania Le Jayenge, which sparkled the Indian tourists' love for Switzerland. And actually, Mr. Chopra shot several films there, and the Lake Union in Bern is actually now named as Lake Chopra, simply because, and there is a statue of Yash Chopra because all films are shot there. And this has been a two-way process. Indian filmmakers went and shot there, and